Hello everyone, welcome back. Today I am here with the second part of cell membrane, and in this presentation I will discuss about membrane proteins. Then I will discuss about transport of biomolecules through the membrane, and there are basically two methods of transportation. One is passive transport, and second is the active transport. Passive transport means in which no ATP are required, and it occurs in the direction of concentration gradient. Second is the active transport, which require energy in the form of ATP. Passive transport occurs by means of simple diffusion or by facilitated diffusion that we will discuss in detail. And active transport is further of two different types. One is simple active transport. Second is the group translocation. And simple active transportation is further of two types. One is primary active transport and second is secondary active transport. So these are some topics that we will cover in this presentation. Let's start. Firstly, membrane proteins. Membranes contains basically two types of proteins. One are the peripheral proteins, which are also known as extrinsic proteins, जो कि easily separate हो जाती हैं by some simple methods, by increasing ionic strength or by extreme pH. और दूसरी होती हैं integral proteins, which are known as tunnel proteins also. So there are two types of proteins. One is peripheral protein. Second class is the integral proteins. Firstly, we'll discuss about peripheral proteins. As the name indicates, ये जो proteins होती हैं, ये protein present होती हैं lipid bilayer के surface के ऊपर. These are present on the surface, outer surface. और ये proteins easily separate हो सकती हैं by simple extraction methods, like we can increase ionic strength or by increasing or by extreme pH. So these proteins, most of the proteins can be easily procured or separated by gentle extraction methods, which includes application of ionic strength, means we will increase the ionic strength, and by extreme pH, by fluctuating the pH. So ये जो methods हैं, इनसे ये proteins easily isolate हो जाती हैं, separate हो जाती हैं. And these mainly affects the weak, जो ये extreme conditions हम change करते हैं, like ionic strength और extreme pH, इससे अफेक्ट होती हैं मेनली द वीक नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शंस. जो ये प्रोटीन्स हैं ये जुड़ी होती हैं लिपिड बायलेयर के आउटर सरफेस में थ्रू वीक नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शंस से बिटवीन प्रोटीन्स एंड लिपिड्स विदाउट इंटरफेयरिंग द इंटीग्रिटी ऑफ मेम्ब्रेन. जब ये प्रोटीन सेपरेट होती हैं मेम्ब्रेन से तो जो लिपिड बायलेयर है उसकी इंटीग्रिटी पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है. सो इट गेट्स सेपरेटेड विदाउट इंटरफेयरिंग विद द इंटीग्रिटी ऑफ बायलेयर. Such proteins are called extrinsic or peripheral proteins, और ऐसी proteins को कहते हैं extrinsic or peripheral proteins, and these are bounded to membranes either by electrostatic force of attraction or by hydrogen bonds, and these both the forces are weak in nature. और ये जो bonding है इनकी ये weak forces हैं, electrostatic force as well as hydrogen bonds, so easily ये separate होते हैं जैसे ही conditions fluctuate होती हैं. So we have two examples. One is Spectrin and second one is the ankyrin. जो ये proteins हैं, they play a primary role in maintenance of shape and flexibility of RBCs. इनका main role रहता है shape और flexibility maintain करने के लिए RBCs की. And these are the common peripheral proteins present in our RBCs. और ये बहुत ही common proteins हैं RBC की peripheral proteins. नेक्स्ट कम्स इंटीग्रल प्रोटीन्स. जैसा कि नाम से पता चल रहा है, दीज आर ऑल्सो नोन एज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, जो कि इंटीग्रल पार्ट हैं. इनको हम वीक एक्सट्रैक्शन मेथड्स से सेपरेट नहीं कर सकते हैं. इफ़ वी सेपरेट देम दे विल अफेक्ट्स द इंटीग्रिटी ऑफ मेम्ब्रेन, जिससे जो लिपिड बायलेयर है वो अफेक्ट होती है. So these are tightly held in bilayer and cannot be extracted out through common methods without disturbing bilayer. So ऐसे कोई भी methods नहीं है जिससे हम इनको separate कर ले और जो membrane की integrity है वो भी बनी रहे. So these are embedded in the transmembrane segments. ये पूरी तरह से insert होते हैं lipid bilayer में, अंदर से लेके outer surface से inner surface तक, और इन्हें transmembrane protein और tunnel protein भी कहते हैं. They consist of non-polar amino acids linked with fatty acyl side chain. ये इसमें होते हैं नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स जो लिंक होते हैं फैटी एसाइल साइड चेन के साथ. Then next comes transport of biomolecules through the membranes. So इसमें
basically two basic processes हैं transportation के. First is passive process, and in this process the movement of substances occurs in the direction of concentration gradient. It means simply from the region of its higher concentration to the region of its lower concentration. अगर हम solutes की बात करें जहाँ पे solute ज़्यादा होंगे वहाँ से ये move करेंगे कम उस डायरेक्शन में जहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, जैसा कि नॉर्मली डिफ्यूजन होता है. बट इन सम केसेस दिस डिफ्यूजन प्रोसेस रिक्वायर्ड सर्टेन कैरियर प्रोटीन्स, और उन कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू जो डिफ्यूजन होता है दैट आल्सो अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बट इट यूजेस सर्टेन कैरियर प्रोटीन्स, एंड दिस टाइप ऑफ डिफ्यूजन इज नोन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बिकॉज दिस डिफ्यूजन इज फैसिलिटेटेड बाय सर्टेन कैरियर प्रोटीन्स. Then second comes active transport. As the name indicate, it require energy and it occurs in against the concentration gradient, and this is also known as uphill journey. और इसमें लगती है एनर्जी, और ये इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं दे मूव्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मीन्स जहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन कम है वहाँ से ये मूव करेंगे जहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन है ज़्यादा. सो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. As we know that biological membranes are selectively permeable, it means they allows the passage of both solvent and solute, certain we can say particular solvent and solutes. Small uncharged molecules like gases, water, ammonia, glycerol, urea, etc. are able to pass by diffusion. ये जो substances हैं ये diffusion से pass हो जाते हैं membrane में. And biological membranes appears to be impermeable to polar substances. जो polar substances हैं वो membrane के through diffuse नहीं हो पाते हैं, such as benzene, ethanol, diethyl ether and many narcotic agents. So ये diffuse नहीं हो पाते हैं through the lipid bilayer. For these types of molecules to take up or release, cell have some special channels and transporters. तो इन substances के लिए जो polar substances हैं उसके लिए सेल्स के पास होते हैं स्पेशल चैनल्स और ट्रांसपोर्टर जिनके थ्रू ये सब्सटेंसेस सेल के अंदर मूव करते हैं. नेक्स्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. इट अकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन और बाय द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. Simple diffusion, as the name indicate, in this type of movement of substances which include solute, solvent or gaseous substances from the region of its higher concentration to the region of its lower concentration. So it is the movement of particles from the high to lower concentration without a protein. इसमें किसी भी प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती है. This is called simple diffusion. So diffusion along with the concentration gradient. So it occurs in the direction of concentration gradient and occurs without any mediation of carrier molecules. इसमें किसी भी carrier molecule की जरूरत नहीं पड़ती है. The movement of solutes takes place from high concentration to a low concentration area till the concentration gradient disappears. जब तक कि जो concentration gradient है और difference है वो disappear ना हो जाए. It does not involve any stereospecificity and is a spontaneous and slow process. इसमें किसी भी तरह के जो conformational changes है वो नहीं होते हैं और ये process spontaneous है and it is also a slow process. The passage of substances through the membrane takes place through the porosity formed. इसमें जो मूवमेंट होती है ये होती है सब्सटेंसेस की कुछ पोरोसिटी मीन्स कुछ पोर्स की तरह स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिसके थ्रू ये सब्सटेंसेस अंदर एंटर करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. As a result of transitory movement of the proteins in the lipid bilayer, जो ये pores बनते हैं as we have discussed earlier, membranes में कुछ movements होती हैं lateral movements और ट्रांसमेम्ब्रेन जो लिपिड्स हैं वो मूव करती हैं. तो इन मोमेंट्स की वजह से यहाँ पे कुछ एक पोर्स लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं जिनके थ्रू ये सब्सटेंसेस अंदर एंटर करते हैं. Next comes facilitated diffusion. As the name indicate, this diffusion is facilitated by some proteins, some special carrier proteins, and it is similar to that of the simple diffusion. It does not require any energy expenditure. और इसमें भी जो मूवमेंट होती है सब्सटेंसेस की दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. सो सिमिलर टू सिंपल डिफ्यूजन डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी एक्सपेंडिचर. किसी भी तरह की एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं लगता है इसमें एंड फॉलोज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. दैट मीन्स सब्सटेंसेस मूव्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन. But it require a protein which is a carrier protein. However, it differs in being stereospecific. इसमें stereospecificity होती है. It means जो carrier proteins है they show some conformational changes जब ये substances को अंदर enter करवाती हैं. Facilitated diffusion is mediated by some special protein molecules जिन्हें बोलते हैं carrier proteins. So ये जो
फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ये फैसिलिटेट किया जाता है बाय सम स्पेशल प्रोटीन्स which are known as carrier proteins. Such carrier proteins that transport specific sugars, amino acids, phosphate and calcium, sodium and potassium have been isolated. ये जो proteins हैं जो carry करते हैं substances को, ये already isolate की जा चुकी हैं. Carrier protein molecules moves across the biological cell membranes by thermal diffusion. इनकी जो movement होती है carrier protein molecules की, that occurs by the process of thermal diffusion, जिससे substances अंदर enter करते हैं. The concentration of carrier metabolite complex is high towards the outer surface of the membrane. जो carrier और जो substrate है, इनकी जो concentration है, that is complex, ये जो complex बनता है of carrier and metabolite, इनकी concentration ज़्यादा होती है बाहर के surface की तरफ as compared to the inner surface. और ये पूरा complex move करता है towards the inner side और substances को अंदर release करता है, जिससे जो substances हैं वो अंदर release होते हैं. So the protein metabolite complex moves across the membrane towards inside and releases the metabolite inside the cell. और जो metabolites हैं, जो substances हैं, उनको cell के अंदर move करवाता है. This is called facilitated diffusion that occurs with the help of certain carrier proteins. Next comes active transport. As the name indicates, it requires certain expenditure of energy, and energy expenditure is in the form of ATP. So ATP की presence में जो movement होती है substances की, that is called active transport, and it occurs against the concentration gradient. इसमें जो movement है substance की, that occurs against the concentration gradient. इसमें concentration के against move करते substances. This is called active transport. Here the movement of substances against the concentration gradient means जहाँ पे low concentration है वहाँ पे move करेंगे substances in the region of their high concentration. So molecules moves from an area of low concentration to an area of high concentration that is against the concentration gradient. We can call it as uphill journey. हम इसे uphill journey भी कह सकते हैं. It requires energy and is dependent upon the ATP supply and can be classified into two categories. One is the simple active transport and the second one is the group translocation. Simple active transport is of two types. One is primary active transport, second is secondary active transport. In case of primary active transport, it requires energy, that is chemical energy in the form of ATP. Here, the substances moves against the concentration gradient, that is from lower concentration to higher concentration, and it requires expenditure of energy in the form of ATP. An best example of this active transport is simple active transport is sodium-potassium pump, that is a primary active transport in mammals, and proton transport by bacterial ATPase. So these are the examples of primary active transportation. Here, the sodium ion is pumped out of the cell and potassium ion enters simultaneously inside the cell, and these two processes occur simultaneously. और ये जो दोनों coupled pump है ये साथ में काम करते हैं. If there is any defect in any of the movement either of sodium or potassium, ये जो carrier protein है, ये जो pump है, ये काम करना बंद करता है. It stops working. So sodium-potassium pump is sodium is pumped out of the cell. Here sodium is pumped out of the cell by sodium pump and potassium is pumped inside the cell simultaneously by this coupled pump. The two pumps work as simultaneously, साथ में काम करते हैं ये. And in case of failure of any one movement, अगर किसी भी आयन की मूवमेंट में कोई भी डिफ़ॉल्ट आता है, फॉल्ट आता है, सो ये अपना काम करना बंद करते हैं दोनों ही पंप्स, सोडियम एज वेल एज पोटेशियम पंप stops its functioning. ATPase is an integral part of plasma protein and works as monovalent ion pump. इसमें जो ATPase है जो मूव करवाता है या सोडियम और पोटेशियम को, इट इज़ एन इंटीग्रल प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट मीन्स ये पूरी की पूरी विड्थ तक ये मेम्ब्रेन, ये प्रोटीन प्रेजेंट होती है मेम्ब्रेन के. Here sodium potassium ATPase spans entire width of the membrane and bears functional sites exposed on the surface of the membrane. और यहाँ पे स्पेशल साइट्स प्रेजेंट होती हैं जहाँ पे ये आयंस अटैच होते हैं and they move out and inside the cell. This image shows how this primary active transport occurs. The example is sodium-potassium pump. Here it requires energy. Here the sodium ion is pumped out of the cell, और जो पोटेशियम आयन है वो सेल के अंदर एंटर होगा, and it requires expenditure of energy.
in the form of ATP. So the ATP driven sodium potassium pump stores energy by creating a steep concentration gradient for sodium entry into the cell. Next comes secondary active transport. Here there is co-transportation. अगर सोडियम सेल के अंदर आ रहा है थ्रू दिस पंप्स तो इसके साथ ग्लूकोज भी अंदर एंटर करेगा. दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन. सो एज सोडियम डिफ्यूजेस बैक अक्रॉस द plasma membrane through the membrane co-transporter protein, it drives glucose against its concentration gradient into the cell. तो ग्लूकोज भी इसके साथ अंदर एंटर करता है against the concentration gradient. मीन्स जहाँ बाहर इसकी concentration कम है अंदर ज़्यादा है तो बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा and it requires expenditure of energy, that is ATP. So this type of transportation is known as secondary active transportation. We can call it as co-transportation and it occurs against the concentration gradient. This is also known as secondary active transport. For this topic, for better understanding, in the last slide of this presentation, I have one animation that will make you clear about the transportation. This ion transport process involves cycle of phosphorylation and dephosphorylation of ATPase. जो ATPase एंजाइम है उसमें phosphorylation और dephosphorylation होती है. That brings these changes और जिससे ये जो ions है move करते हैं across the membrane. The sodium potassium binds to specific sites on the of the ATPase complex. जो ATPase complex है वहाँ पे ये सोडियम और पोटेशियम की particular binding site होती है जहाँ पे ये bind करते हैं. Bound sodium is required for phosphorylation of larger subunit of ATPase. जो सोडियम है ये बाउंड होना चाहिए larger subunit में ATPase की, तभी इसकी phosphorylation होती है. Then phosphorylation of ATPase leads to the conformation changes in the protein, resulting in reorientation of enzyme within the membrane. जैसे phosphorylation होती है, that brings the conformation changes in the membrane protein. जो ये protein है ATPase, इसमें conformation changes आते हैं जिससे जो ion है वो अंदर एंटर करता है और जो membrane that reorient itself अपनी original position पे आ जाती है. Thus allowing sodium to pass through the membrane, जिससे सोडियम membrane से पास हो जाता है towards outer direction, outer side, out of the cell. सोडियम बाहर मूव करता है. While dephosphorylation of this protein is brought about by bond potassium. और जो dephosphorylation का प्रोसेस है वो होता है तब जब पोटेशियम बाइंड करता है इस ATPase में, resulting in reversion to the original conformation of protein, जिससे जो प्रोटीन है ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है और इसकी होती है dephosphorylation, means removal of phosphate, and this allows the entry of potassium. According to another view, ion translocation is probably carried out by minor conformation changes. एक separate view है जो मानता है कि इतने बड़े changes नहीं होते हैं. There are some minor changes in the ATPase जो enzyme है resulting in phosphorylation and dephosphorylation. It has been supposed that ATPase has a channel through its center through which ions transportation takes place. एक separate view है जो मानता है कि इसके center के through एक particular channel है जिसके through ये ions move करते हैं towards outer side and inside the cell. This animated photograph shows this sodium potassium pump. As we know that 3 sodium ions moves out of the cell और 2 potassium ions enter करते हैं cell के अंदर, and this process involves phosphorylation and dephosphorylation. ये जो processes हैं ये involve करते हैं दोनों चीज़ों को, phosphorylation and dephosphorylation, and this process is carried out by this protein that is ATPase और ये इसको काम को करता है and it works against the concentration gradient. सोडियम concentration gradient के against जाता है, means अंदर concentration कम है तब भी ये बाहर मूव करेगा, बाहर ज़्यादा है, and similar is applied to potassium. And this is also an example of anti-transport. इसमें एक जो molecule है बाहर जा रहा है और दूसरा अंदर आ रहा है and it requires the expenditure of energy. So intracellular compartment with low concentration of sodium, इसमें कम concentration होती है but जो सोडियम है यहाँ से बाहर ही मूव करता है and it requires expenditure of energy. So that's what. Next comes secondary active transport. The lactose permease system in E. coli and glucose transport in intestine epithelium of mammals and are examples of secondary active transport. So दो examples हैं, lactose का permease system जो lactose की entry को allow करता है E. coli में, और glucose transport intestine के epithelium में mammals के. So these both are examples of a secondary active transport. Primary active transport results in sodium pumped out of the cell and potassium enters inside the cell, that we have already discussed. This is the example of primary active transport.
This can be employed for secondary active transport of glucose into the cell against the concentration gradient. जो ये पंप है सोडियम पंप, इसको यूज़ किया जाता है ग्लूकोज की एंट्री के लिए भी, इसमें सोडियम भी अंदर एंटर करेगा और इसके साथ ग्लूकोज भी एंटर करेगा, बट दीज विल एंटर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और इस तरह के ट्रांसपोर्ट को को ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। दो जो सब्सटेंसेस है वो साइमल्टेनियसली एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एंड दे आर मूविंग अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। फॉर दिस इट रिक्वायर एटीपी। Thus, there is glucose-sodium co-transport catalyzed by glucose carrier. So, दोनों ही substances move करते हैं, that is sodium ion as well as glucose, जो एक ही direction में move करते हैं। Here, this sodium pump is used for the entry of glucose in the mammals intestinal epithelium. यहाँ पे जो सोडियम है इसके साथ ही ग्लूकोज भी यहाँ से अंदर एंटर करेगा और दोनों ही एक ही डायरेक्शन में एंटर करते हैं एंड दे मूव्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इट मीन जहाँ पे कंसंट्रेशन ग्लूकोज की कम है वहाँ से ये मूव करेगा इन द डायरेक्शन वहाँ जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, दैट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इट इज़ ऑब्जर्व फॉर वेरियस अमाइनो एसिड्स एंड शुगर्स इन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स एंड फॉर अमाइनो एसिड्स इन बैक्टीरिया। सो ये और चीज़ों के लिए भी ऑब्जर्व किया गया, जैसे अमाइनो एसिड्स हैं, शुगर्स इन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स एंड अमाइनो एसिड्स इन बैक्टीरिया। द सोडियम पंप मेंटेन्स अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आउटसाइड। जो सोडियम है इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है बाहर, एंड द सेल देन on the other hand on the inner side of making the membrane polarized, जिससे कि जो membrane है polarize हो जाती है, मीन्स बाहर इसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है, अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है। This results in tendency of sodium to enter the cell, जिससे जो सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है तो ये अंदर एंटर करता है and does it in the form of carrier sugar और carrier amino acid complex। और जो एंट्री होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कैरियर ग्लूकोज और वी कैन से कैरियर अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स बनता है जो इस पे अटैच होता है और ये सब्सटेंस। देन अ रिवॉल्विंग डोर मॉडल हैव बीन प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक मॉडल है जिसे कहते हैं रिवॉल्विंग डोर मॉडल। इट हैज़ बीन प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। द कैरियर प्रोटीन एक्ट्स एज अ रिवॉल्विंग डोर। ये एक्ट करता है रिवॉल्विंग डोर की तरह इन द सेल मेम्ब्रेन। द कैरियर प्रोटीन हैज़ अ स्लॉट। यहाँ पे एक जगह होती है जहाँ पे विच फेसेस टू आउटसाइड इनटू विच द सब्सटेंस टू बी ट्रांसपोर्टेड गेट्स अफिक्स्ड। यहाँ पे बाहर की तरफ जो सब्सटेंस है जिसने अंदर एंटर करना है वो यहाँ पे अफिक्स होता है एक स्लॉट पे। देन द कैरियर प्रोटीन अंडरगोज कन्फर्मेशन चेंजेस। जैसे ही सब्सटेंस इस पे अटैच होता है इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस हो जाती हैं। एज सुन एज द सोल्यूट एंटर इनसाइड द सेल देन इट्स रोटेट्स सो दैट द स्लॉट कम्स टू द इनसाइड। जैसे यहाँ पे जो ग्लूकोज है ये इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ है, जब ये इसको मूव करना है तो इसकी जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड रिवॉल्विंग डोर मैकेनिज्म ड्यू टू कन्फर्मेशनल चेंजेस। दिस मूवमेंट इज ड्रिवन बाय केमी-ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द सेल। और ये जो मूवमेंट है केमी-ऑस्मोटिक पोटेंशियल से होती है। The substance is released into the cell and the protein now returns to its original position। जैसे ही ये substance बाहर रिलीज हो जाएगा वैसे ही प्रोटीन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी and regain its original form। और ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन करता है। The secondary active transport is mediated by carrier protein molecules under the influence of chemiosmotic pressure and does not involve direct participation of ATP। इसमें directly ATPs involved नहीं होते हैं but indirectly ATPs are required for this process and this is called secondary active transport। Next comes group translocation। Here variety of sugars like we have glucose, fructose and mannitols occurs across the cell membrane through the phosphotransferase system। So for this we have special system जिसे बोलते हैं phosphotransferase system। Sugar is released inside the membrane as a phosphorylated derivative which cannot go back through the membrane। तो शुगर को अंदर एंटर करते हैं थ्रू फॉस्फोराइलेटेड डेरिवेटिव और ये वापस मेम्ब्रेन के बाहर मूव नहीं कर सकता है। दिस फॉस्फोराइलेटेड ग्लूकोज इज देन कैन डायरेक्टली बी पार्टिसिपेटेड इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज लाइक वी हैव ग्लाइकोलिसिस। सो फॉस्फोरिलेशन के बाद जो ग्लूकोज है वो यूज़ होता है जो हमारी रेस्पिरेशन में कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है उसमें। दिस फॉस्फोट्रांसफेरेज सिस्टम यूटिलाइजेज फॉस्फोइनोल पायरुवेट फॉर एनर्जी जनरेशन। तो ये यूज़ करता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट को एनर्जी जनरेशन के लिए एंड इट कंप्राइजेज ऑफ 2 एंजाइम्स एंड अ हीट स्टेबल प्रोटीन। इसमें 2 एंजाइम्स और एक हीट स्टेबल प्रोटीन there is a small histidine containing protein also found in the cytosol which are involved in this process। Here this phosphoenol pyruvate and enzyme 1 they will combine to and gets phosphorylated। This pyruvate gets separated
तो ये जो एंजाइम है ये फॉस्फोरिलेटेड होता है और पायरुवेट यहाँ से सेपरेट हो जाएगा. देन दिस एंजाइम वन ट्रांसफर द फॉस्फेट ग्रुप टू द हीट स्टेबल प्रोटीन. ये फिर इस फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करता है हीट स्टेबल प्रोटीन पे, दैट इज HPR. Here this enzyme 1 gives phosphate to this heat stable protein and transfers phosphate to the heat stable protein, और enzyme without as it is वैसे ही यहाँ से separate हो जाता है because it does not participate in the formation of product जैसे catalyst करते हैं. So this is known as secondary or group. So this is called group translocation. Here, this enzyme 2 is a complex and it contains further two enzymes, namely 2A and 2B. इसमें भी दो enzymes present होते हैं, 2A and 2B. In addition to this, it also contains magnesium ion and phosphatidyl glycerol. So these all the substances, or we can say molecules, are involved in transportation. Enzyme 2A is sugar specific. जो enzyme 2A है, it is highly specific. ये sugars के लिए specific होता है और जो हर सेल के अंदर different enzymes होते हैं for a particular sugars. So when this glucose enter inside the cell, it involves phosphorylation. It gets phosphorylated and is converted into glucose 6-phosphate. Then this enzyme undergoes the conformational changes and events are repeated for the transfer of another sugar. तो ये जो events हैं ये सारे के सारे events repeat होते हैं for this transportation of sugars of different types. So this was all about for the transportation of biomolecules across the membrane. For your better understanding, in next slide, I have two animations that will make you clear about the transportation across the membrane. That is passive or active transport, which include simple or group translocation. So please go through these animations that will make you clear about the movement of molecules or substances across the membrane. In order for us to use the molecules and energy we get from food, we must transport them across cell membranes. Transport of nutrients is essential for all cells, but we'll use cells in the small intestine to teach the principles of membrane transport. Let's zoom into the surface of an intestinal cell. The plasma membrane is selectively permeable. Some molecules can move across it, while others cannot. How do materials enter and leave cells? Lipids, such as these yellow molecules, can move freely across the lipid bilayer. Notice that the lipid molecules move down their concentration gradient from where they are more concentrated to where they are less concentrated. This is an example of simple diffusion. Diffusion is a form of passive transport. It does not require energy from the cell, but it does depend on the concentration gradient, size and charge of the molecule or ion. However, most molecules cannot cross the lipid bilayer. Instead, molecules like the sugar fructose move into intestinal cells by facilitated diffusion, moving down their concentration gradient and through transport proteins. It also differs because it acts only on specific molecules, and the transport proteins can become saturated, reducing the amount of diffusion. However, facilitated diffusion doesn't require energy from the cell, so, like simple diffusion, it's a form of passive transport. The majority of water molecules cross the plasma membrane by facilitated diffusion, also called osmosis, through specific protein channels called aquaporins. Some ions, such as sodium and potassium, require transport against their concentration gradients. The sodium-potassium pump actively transports these ions from where they are less concentrated to where they are more concentrated. This process requires energy from the cell and is known as active transport. Energy from ATP is used to move 3 sodium ions, shown in red, out of the cell, and 2 potassium ions, shown in blue, into the cell. Because the pump uses ATP directly, this type of transport is called primary active transport.
Another type of active transport, secondary active transport, also moves chemicals against gradients. It doesn't use ATP as a direct source of energy. Instead, it uses the downhill gradient from one ion or molecule to drive the uphill movement of another ion or molecule. For example, sodium and glucose move into the cell by secondary active transport in a process called cotransport or symport, because both substances are moving in the same direction. Sodium ions move down their concentration gradient created by the sodium-potassium pump, but because glucose concentrations inside the cell can quickly exceed those outside the cell, glucose moves against its concentration gradient. The cell moves larger materials, such as proteins, from the intracellular fluid to the extracellular fluid, using vesicles that fuse with the plasma membrane and release their contents outside the cell. This process is called exocytosis. In endocytosis, the plasma membrane pinches in, forming a vesicle that contains material from outside the cell. Cells use all these processes, passive and active transport, exocytosis and endocytosis, to move materials across their membranes. Group translocation is a process in which an organic molecule, such as glucose, is transported into the cell while being chemically modified. The PEP phosphotransferase system is an example of group translocation. In this process, the phosphate from the high-energy compound phosphoenolpyruvate, or PEP, is transferred to HPR by enzyme 1, and the product pyruvate is released. The phosphate is then transferred from HPR to enzyme 2B by enzyme 2A. The membrane-bound enzyme 2C then carries the glucose across the membrane, and the glucose becomes phosphorylated as it enters the cell. This was all about for our today's discussion about membrane proteins and transportation of substances across the membrane. That is through simple diffusion, that is simply through a passive transport or active transport, and its types. Hope you will get some idea from this presentation. If you have any questions, queries, and any suggestions, you can give it in comment section. If you found this presentation useful, you can share it with your friends. Thank you. Have a great day.